block, it goes to the false block, and after executing false block, it will come to the next statement to this. This is basically the syntax of if-else statements. There, previously what we discussed, if expression, a block. There, either the block is executed or the block is not executed, depend upon the expressions. But here, one of the block will definitely be executed. One of the block will definitely be executed. Either the if block or else block, depending upon the outcomes of the expression. That's basically the sequence of execution. Do you understand this basic sequence of execution in this if-else statement? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. With example, Yes, it will be sir. more clear. With example, Amarjit, don't worry. If it is not understood, with the example, it will be more clear. Just wait for some time. See, we have a problem like this. The basic salary, we want to calculate the gross salary of a person. We want to calculate the gross salary of a person in an organization. You know, the salary has many components, has a basic salary, house rent, dearness allowance. So many other allowances you will be getting when you join in the corporate sector. We are getting HRA and DA and basic salary. That's why I am only writing those parameters. But when you join in corporate, you will find out many other, I will say, components of the salary. Anyway, the gross salary is basically the basic plus HRA plus DA. The basic salary plus HRA plus DA is the gross salary. How much someone will get. And sometimes in some company, the HRA is fixed, and sometimes HRA is some percentage of the basic salary. And DA is always some percentage of basic salary. DA is always some percentage of basic salary, irrespective of your positions or anything. Now read the questions. If somebody gets the basic salary less than 1,500, it is not rupees, it is in dollars. I wrote in rupees because if I write basic salary is 1,500 rupees, you will be astonished to see this. ऐसा कैसे आप लिखते हैं 1500 में होगा क्या सर? एक दिन का तो चाय पानी का खर्चा नहीं होगा. Those are in dollars. Those are in dollars. Okay. So you may say these are in $1,500. HRA will be 10% of the basic. DA will be 40% of the basic salary. But if your salary is greater than or equal to 1,500, if the basic salary is 2,000, 4,000, 5,000 like this, your HRA is fixed, 500 rupees, and your DA will be 50% of the basic salary. And we need to find out the gross salary. The input to this program is the basic salary of a person. The input is the basic salary. The output is the gross salary. Is it understood what problem we are going to Yes, sir. write down a program Yes, for sir. this? Yes, sir. Very good. Yes, sir. Yes, I have sir. written the formula. HRA is basic salary into 10 by 100. And DA is basic salary into 40 by 100 is one option. Another option is HRA is fixed 500 and DA is basic salary into 50 by 100. And finally, our gross salary is calculated basic salary HRA plus D. The basic abstract of the program is inputs. What is the input to this program? Basic salary. I wrote a variable input variable BS. The output, actually the output is gross salary. Output is gross salary. To calculate this, we need to go for an intermediate calculation of HRA and DA. Is it understood? Yes, sir. Yes, sir. The exact output Yes, we sir. can look at, it is basically gross salary. But to calculate gross salary, I will do intermediate calculations, and those intermediate calculations are stored in two temporary variables, HRA and DA. Up to this understood, yes or no, input and output. Yes, sir. Yes. So how many variables are declared in this program? If you look at this, Four. Four variables. Four. Variables. how many variables I will read in this program? One. 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 Input One. one. Only Then one, we sir. will do the computation and finally display the results gross salary. Is the basic control of the program understood? Tell me yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, समझ में आ गया? अब जो प्रोग्राम लिखेंगे कहाँ से शुरू करेंगे? Has include याद है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Has include मैंने लिखा नहीं. Why I have not written has include? कोई बोल वो सकता है क्या? कॉमन है सर. Common. Common होगा. मेरे पास उतना जगह नहीं है.
प्रोग्राम छोटा होगा वहाँ I'll write down there, I'll write down has include std.h and main, all these I'll write. But where I find my program is becoming bigger, I will not write down those common things at the beginning of the program. Yes, sir. Understood it? Yes. Yes, sir. Very good. Yes, So we sir. declare basic salary, gross salary, DA, HRA, all I declare a float. But if you feel you can write down the basic salary as integer also. If you Long, sir. हाँ long, don't long. इतना salary थोड़ी मिलेगा. ये float में चलेगा. हाँ तुम लोग long सोचो सोचने के लिए कोई खराब नहीं, हम लोग नहीं सोच पा रहे हैं. बात सही है. नौकरी लगा दे अंबानी बनेंगे. ठीक है. Then print up the basic salary, scan it, person yes. Up to this, it is understood. Everyone tell me yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Understood, sir. Now, let's calculate the intermediate variables, HRA and DA. Let's calculate. If the basic salary is less than 1500, if BS is less than 1500, we'll do HR equal to BS into 10 by this, DA equal to this. 40%. Yes, If sir. it is 40%. 40%. ठीक है sir. Yes. If it is greater than this, we will do that. Tariff And fix. can anyone Tariff. say this operation will be floating point or integer? What I have written over here. Floating point. Floating Because even if I wrote a 40 integer, BS into 40, BS we have taken as floating point. So this will be floating point and division with this will also be floating point. Floating. Very good. Up to this is understood to everyone, yes or no? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Then my last statement, I'll write down GS equal to BS plus HRA plus DA and I'll display my gross salary rupees percentage. Well, don't please change it to dollar, okay? तुम्हारा प्रोग्राम में थोड़ा डॉलर कर तो अच्छा लगेगा वरना बहुत बुरा लगेगा सर क्या दो वही है sir. सर डॉलर का साइन यूज कर लेंगे सर. हाँ सर डॉलर का साइन यूज कर लो क्या प्रॉब्लम है Okay, sir. ठीक है Okay, हाँ डॉलर कर लो हाँ डॉलर Yes, कर sir. लो वरना बहुत सर बोलना थोड़ा गरीब जैसा लगा. हाँ हाँ लगेगा हाँ. Sir. लगेगा इंजीनियर का सैलरी है. सर डॉलर छपेंगे सर. हाँ डॉलर समझ ये समझ में आया कि नहीं यस सर. Yes, sir. हाँ sir. एकदम. आ गया। अच्छा और एक पूरा दूसरा basic तरीका मैं बताता हूँ सर ये और एक बार में सर, कर सकते हैं बीच हाँ में मैं कर रहा हूँ return- सत्यव्रत मैं बीच कर में रहा return हूँ Yes, sir. मैं कर रहा हूँ look at this I wrote it like this I need not to take so many variables I didn't declare HRA and DA in this case I wrote if BS is less than 1500 GS equal to BS plus BS into 10 divided by this plus BS into 40 divided by 100 else GS equal to and print the cross cell is it understood tell me yes or no Yes, sir. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसमें क्या एडवांटेज मिला कोई बोल सकता है तो जगह कम लगा. ज्यादा लिखना नहीं Yeah, है। rotation लिखना है. we did not declare Sir, कम memory consume होगा. सर प्रोग्राम छोटा हो गया। program Program. GS Yes, sir. we need not to declare understood it or not Sir, कम Yes, sir. memory Yes, sir. consume होगा और program execution time कम होगा. very good जी सर। ये समझ में आया कि नहीं सब लोग को Yes, sir. Yes, sir. आ गया। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते Sir, हैं इसके बीच में रिटर्न देना पड़ेगा। सर पिछला वाला प्रोग्राम में सर हाँ? इसमें सर लॉन्ग अगर लिखेंगे तो मेन में INT मेन चलेगा. हाँ वो ईट मैन लिखते हैं रिटर्न के लिए लिखेंगे मैं- percentage. अच्छा अभी छोड़ो ना वो मैं बात में बोलूंगा मैं बोला हूँ वो बोलूंगा ईट मैन लिखते हैं रिटर्न जीरो के लिए इसका अंदर का साथ कोई संबंध नहीं है ओके सर. और सर स्कैनएफ में परसेंटाइल. Don't worry. ये तो हो गया यहाँ तक। इफ के अंदर Sir, scan रिटर्न है, देना पड़ेगा कि if percentage. का फंक्शन है। नहीं 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 लास्ट में बोलोगे ना यहाँ लिखोगे return। लास्ट में लगेगा. नहीं मतलब अगर इफ वाला ही सेटिस्फाई हो जाता तो वहीं पे रुक जाता नहीं प्रोग्राम। कोई बात नहीं if he satisfied it goes here doesn't execute else डायरेक्टली comes out of this। डायरेक्ट वहां पे आ जाएगा. ये Correct बात if खत्म करके प्रिंटफ में आ जाएगा अगर ये कंडीशन फॉल्स है एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करके प्रिंटफ में आ जाएगा आई टोल्ड इट either this or this and Yes, I sir. didn't put bracket because I have only one statement why should I put a bracket हाँ. यस सर. कर्ली ब्रेसेस नहीं देंगे. नहीं जिसको देना है दे दो कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें सिंगल लाइन में तो खत्म हो जाता है. जरूरत नहीं है Yes, हाँ sir. सर. इज इट अंडरस्टूड यस और नो Yes, sir. Yes, sir. Understood, sir. आगे बढ़ते हैं सर यस ये तो अकाउंटेंट का प्रॉब्लम तुम लोग अब सोचते हो कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा रहे हैं ये सर आपको सब आता है सर. अकाउंटेंसी का Accountant. प्रॉब्लम हो गया फिर आगे पढ़ेंगे फिर मैथ्स All में Maths rounder. सर आज देखिए सर मैथ आ गया. हाँ फिर सर maths आएगा। फर्स्ट ईयर फोर्थ ईयर जितना भी सब्जेक्ट है सर आप पूरा ले लीजिए सर. क्या हमारा चीज? बड़े बड़े गूगल माइक्रोसॉफ्ट में हो जाएगा सर. सर, मैथ पढ़ा दीजिए सर आप। मैथ स्टार्ट कर दीजिए पढ़ा। नहीं, देखो ये देखो गिवन 3 पॉइंट्स लुक एट दिस इन अ 2 डायमेंशन
3 points are given. 3 points are given using 6 variable. X1, Y1 represents 1 point in the plane. X2, Y2 represents another point in the plane. X3, Y3 represents another point in the plane. Do you agree any 3 point will constitute a triangle or may not necessarily be? No, sir. No, sir. No, sir. Not necessary. Necessary. Can you tell me the condition to know these 3 points will not be a triangle, rather they will be collinear? Sir, we have to three find the points should area of be the non-collinear. triangle. X1 is equal to 0. जोर से बोलो, जोर से बोलो। Determinant is equal to 0. X1 सर अगर हम इस ट्रायंगल की एरिया Determinant is- निकालते हैं और उसका Sir, area of zero triangle हो is जाता है, Area of a triangle, very Area. zero. Yes, very good. That is one of the solutions. If area of the triangle is 0, definitely they are they will Collinear. Collinear, sir. It will be Collinear. all these 3 Yes, sir. points. Very good answer. Anything else? The sum of two sides is equal to the third side. नहीं वो नहीं, वो- नहीं वो नहीं वो नहीं है, वो वो नहीं होगा। कंडीशन नहीं है। The area of triangle is not Area of triangle समझ ले, area of triangle I understood. But if I ask you to find out area of a triangle, sir, you will find a lot of सर दो साइड उसका इक्वल होने से स्लोप भी तो कर सकते हैं सर। हाँ हाँ हाँ, slope slope बोल रहा है, कौन बोल रहा है? slope हाँ, स्लोप slope से कर हाँ, Slope से सही कर बोल रहा है, सकते। बोलो नाम बोल के। सौरभ से। हाँ सौरभ सही बोला। सौरभ क्या बोला बोलो? सर स्लोप निकाल के पास सर अगर कोलिनियर होगा तो उसका स्लोप सेम हो जाएगा। Yes, yes. A triangle, we can find out the area, but it will be difficult task. Let me tell. You have to find out Formula sides डालना of a होगा, triangle. कैसा फॉर्मूला डालना होगा? नहीं, Formula बोलता डालना हूँ, you have to find out sides of a triangle. Side निकालने A के बाद plus you have B to find plus out sum divide of by the two. sides and put the formula square root of s into s minus m whole into s minus b. ये तो बहुत Yes, sir. Yes, Yes, sir. है। हाँ सर Do you सब agree बहुत with me? लेंथी हो Yes or जाएगा no? सर। उसको छोड़ के ऐसे कर देंगे. Sir, We'll find simple out the slope. slope of these 3 lines. Okay, sir. Yes, sir. We'll find out M1, M2 and M3. तीनों slope निकाल देंगे. If any two slopes are equal, they will be parallel or perpendicular. Parallel. See, any two lines are parallel. Will it constitute a triangle? No, No, sir. sir. नो सर नो No, सर No, sir. You all agree to me, yes or no? Yes, sir. यस सर Next question here is, given 3 points, and for each point you will take 1 variable or 2 variables. Two Two variables. Remember, point doesn't mean that 1 value only. It represents in a plane. You have to give the value of the x coordinate and y coordinate. Find out M1, M2 and M3. Find out 3 slopes. And after finding 3 slopes, then no 2 lines should be parallel. That implies a triangles. No 2 lines. If any of the 2 lines become parallel, then it will not be a triangle. It will be collinears. So what I have to write here, if you look at this, I'll find out the slopes, then write down the equation like this. M1 not equal to M2 and M2 not equal to M3 and M3 not equal to M1. If all these 3 are satisfied, it will constitute a cycle. It will constitute a triangle. Yes or no? Yes, sir. हाँ सर ठीक है सर ठीक है ठीक है. ये भी लिख सकते थे. ये और भी कर सकते थे. पहले तो M1 M2 M3 निकालना होगा Yes, M1 equal to M2 Easy. or M2 equal to Equal to M3 M3. or M3 M1 equal to M1. M3. If any one of this is true, then I would have told this is not a triangle. The lines, the points are collinear. Agreed or not? Yes, sir. यस सर Agreed, sir. So now this is the problem I explained. So do remember one thing. When you want to write a program, try to understand the problem clearly. Anyone who understands the solution of a problem, he can write a program. Student tells programming difficult. नहीं, programming difficult नहीं है. We do not know how to find out a solution to the problem. वो हमको ठीक से पता नहीं. इसीलिए program difficult होता है. अगर मेरे को solution पता है, if I know the solution properly, how I can do it using a pen and paper, I can write a program. Now tell me, coming to the program. पहले क्या variable declare करेंगे? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. How many variables Sir, will you एकदम. declare altogether? 6 or 9? Sir, 9, sir. 9 सर How many variables are input variables? How many variables are output सर variables? Six variable output. Output 3 variable. 3 are output 3 output 6 input Very good, very good. Yes, sir.
all variables you can say float. Yes, If you sir. take integer, Yes, there sir. might be a small mistake, so don't take integer. Float Take will be- float. Float is yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Even if you take x1, x2, all this, if you take integer, but the assignment should be to a float variable or not, and Yes, the sir. division should be floating point divisions. Otherwise, 3 by 2, the slope will be 1, but not 1. And Yes. 2 by 3, the slope will be 0. So Yes, take sir. those variables Yes, sir. as floating points. Do you understand why do you take floating point? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Those sir. things, all computer science students must concentrate on this. Many programmers do not give stress on those and make mistakes, even if the formulas are correct. Very good. Yes, समझ में आया कि नहीं आया? Now let me start with this. Input is x1, y1 like this. Output is m1, m2, m3. They are output variables. Let me tell like this way. Declare the variables x1, x2, 6. And read the inputs. Will you read all 9 variables or only 6 variables? So, Only six. Six, sir. Sir, only 6 variable. कार्तिक यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया बोलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, very good. आगे बढ़े. Yes, sir. इसके बाद क्या करेंगे? कंप्यूटेशन. Yes. वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया. उसके बाद क्या Yes, sir. करेंगे? Computation. Print scan डालेंगे. Print करके रीड हो गया हमारा. रीड हो गया. Yes, sir. रीड हो गया. slope कंप्यूटिंग करेंगे, स्लोप निकालेंगे. स्लोप निकालेंगे, सर. computing. वही डायग्राम मैंने इधर ले आया. M1 is this, M2 is this, M3 is this. हाँ, एक चीज आफ्टर द स्टेटमेंट पुट ए सेमीकोलन. यस और नो? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. हाँ, वो चीज तुमको छोड़ दी. यहाँ हो गया. उसके बाद क्या करेंगे? इफ स्टेटमेंट लिखेंगे. Yes, sir. Very good. Statement, sir. Very good. Display test M1 is not equal to M2 and M2 is not equal to this and this. If all these three are true, then this is a triangle or this is not triangle. Or not. a triangle. Up to this is understood, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So write down this. See, here I don't write float x1, x2. I don't write here scanf. All this you have to write. Otherwise what will happen? मैं जो लिख दूंगा कॉपी करके बोलोगे सर हो गया. ये सही है कि नहीं है? तुम्हारा थोड़ा प्रैक्टिस होगा. Yes, sir. अदरवाइज होगा क्या? कुछ टीचर आते हैं प्रोग्राम लिख देते हैं कॉपी करके चले जाते हैं. इसमें थोड़ा बहुत आइडिया होगा. इज इट अंडरस्टूड? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस. आगे का प्रोग्राम है. आगे फिर देखो. If else if. This is again another variety of if statements. Here, rather than 2 blocks, we started with 1 block, only if statement. We continued with the 2 blocks, anyone will be executed, it can be if else. We can have more than 2 blocks also. In that case, I'll use if else if statements. I'll use if else if statements. If I have more than 1 block, and only 1 block will be executed. Other than this, if I have more than 2 blocks, I will not go for if else. I'll go for if else if statements. And do remember, even if I write 20 different blocks, how many blocks will be executed exactly? One. Sir, only one. So sometimes in this case, maximum 1, if I write else if last statement, not else also. Sometimes. No block will be executed instead of writing else if I write else if. I'll come to that. But let's go. Yes, with one. Yes, sir. Let's go. with Yes. one. I wrote expression 1. If expression 1, block 1. If else if expression 2, block 2. Finally else and dot जगह नहीं था मैंने दिया नहीं. Then I can write else if expression 3, block 3. And finally else block F. Block F stands for if all expressions found to be false. If all expressions found to be false, then this else block will only be executed. If any one of the expression is found to be true, any one of the expression, the corresponding block is executed and the computation will come out of that after completion of that block execution. Understood it? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I have a question. But let me write down the answer also over here. Suppose in place of this else, it would have been else if and some expression 3. In this case, there is a possibility this is false. Yes or no?
Yes, sir. Yes, sir. This could also be false. Yes, sir. This could also be. False. Will you execute any one of the block? No, sir. No, sir. No, sir. None will get Do remember this. If I say, sir, last is else only, not else. In that case, we'll fail execute. hoga. We'll execute how many blocks? Only one. One block. But the One block last, only the fails. last statement is, again listen carefully, the last is else if. We may also execute 0 or One. 0 or 1. वो तो कोई ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेंगे या तो एक ही ब्लॉक एक ही करेंगे। इज दिस अंडरस्टूड टेल मी यस और नो Yes, sir. Yes, sir. तो अंग्रेजी स्टेटमेंट जैसे सो ज्यादा कुछ तकलीफ थोड़ी ना है लुक एट अनदर क्वेश्चंस ओह क्वेश्चन तो लिख दिया आंसर चलेगा राइट द प्रोग्राम अभी अभी गया था मैथमेटिक्स राइट द प्रोग्राम टू डिस्प्ले वेदर अ व्हीकल मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी और विद सम एक्सीलरेशन और सम डिसेलरेशन कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सीलरेशन कितना होता है Zero. a body, a car, any object moves with a constant velocity means there is no accelerations. Yes, sir. If Uniform. acceleration is zero, if acceleration is zero, we will declare the body moves with a constant Constant velocity, then the velocity. distance covered will be as equal to Vt only. The distance being covered by the body will be V into T, the velocity into T. Because no acceleration is there. And sometimes the body, the car or the object might be with some accelerations. And once it is an accelerations, the speed will keep on increasing. The speed will increase. And if it is in deceleration, the speed will gradually decrease and finally the body will come to a stop Rest position. position. Once you apply brake in a car and once you put accelerator, the accelerations will be increased. Even if you have a particular accelerations, even if you have a constant acceleration, there could be a variable acceleration also. But the acceleration is constant, the velocity will increase. But whether knowing the value of A, can you declare the body is in a constant velocity or constant acceleration or deceleration? Yes, sir. or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So now either how many inputs are there? Only Only one. Only one, Each of sir. these input value of A, 0, positive or And negative. Negative. or negative. Negative. Very good, very good. इसके बाद वाला स्टेटमेंट में क्या लिखूं? कोई बोल सके? Sir, if A equals to zero, हाँ? equals to zero, then print the vehicle. Velocity, constant velocity. सही बोले, सही बोले. If If A A is double equal to zero, zero. print F, the vehicle moves sir, with yes, constant velocity. Else if A greater than zero, Zero. print F, the vehicle moves with accelerated velocity. And else print F, the vehicle moves with decelerated velocity. Is it understood? Tell me yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Tell me here. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Yes, sir. One of the printf statement will be executed yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Only one. Yes, sir. मैं एक चीज पूछता हूँ मैं एक चीज पूछूंगा इधर सपोज अच्छी तरफ से समझ रहा है इन दिस इफ आई राइट डाउन दिस आज इफ 8 हाँ तो ठीक है नहीं ठीक है तो देखो यहाँ थोड़ा मैंने नॉट लगा दिया क्योंकि मैं ये मेरे ठीक लग रहा है यहाँ मैं कितने सिंबल लिखा हाउ मेनी सिंबल्स आई रोट हियर Four. Four, sir. Four. हियर हाउ मेनी सिंबल्स आई रोट Only two. Only, sir. Two. सेम और not? Same, sir. Yes. Same. Which one will you prefer to write? Two, First one. If I say this is First my one. first one or this is my second one, Second one. Second one. समझने से थोड़ा मुश्किल होगा बट अच्छा है अगर एक बार समझ गए ना ये अच्छा है Yes, समझ आया कि नहीं आया Yes, sir. मजा है. हाँ. ये मजा आया कि नहीं आया कैसे चल Yes, यही sir. तुम लोगों को करना है प्रोग्राम में हाँ. सर इसको थोड़ा एक बार बता दें सर. क्या बताएं ये first और second वाला First Sir, वाला you तो second easy. one. This if Second statement, वाला. I want to replace The with second. this. I want to replace with this. See what Yes, sir. happens. What happens? When value of A is 0, when value of A is equal to 0, not of A
will Yes, be sir. returning 1 or anything else. Yes. One. One. If it is 1, it is treated as true or not. Yes, sir. True, sir. If it is true, this will be And displayed. this statement will be It is executed. understood or not. Supratim, समझ हाँ, आया कि sir. नहीं है? Yes, sir. Yes. समझ गया And if A is not 0, can be 1, False हो out जाएगा. of 1. फॉल्स सर जीरो हो जाएगा False. Next next में चला जाएगा. sir. Next. फॉल्स Yes. नेक्स्ट में चल जाएगा Complement of 5, ये true है. हाँ सर ये true है. और- This is true. हाँ. Not of true is false. So basically, if I write A and put a not over here, if A is true, what is not of A? Sir, false. False. फॉल्स सब लोग पता हो गया. Now do you understand how do I rectify a program to a smaller program also? ये Yes, idea sir. है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यस सर तो ऐसे ट्विस्ट करो प्रोग्राम को, जैसे हम्म। बहुत लोग को समझ में नहीं आएगा. ये तो मेरी अच्छे से समझ लिए. But if I write not A, many will not understand. Do you agree with me? Yes or no? Yes. Yes, sir. तो कोई बात नहीं है. Yes. अब उन लोग का समझने के लिए, if you want others to understand, you write a comment statement. हाँ, कुछ बोलना चाहते हो, बोलो. सर एक्सेलरेशन तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होता है ना. वो acceleration मैंने integer लिया. If you take floating point, then this will not work. Not will not work. Very rightly told. Very rightly. I took that is an integer number. यस. लेकिन सर if else में तो सर वो बहुत सही है. बात if सही है. else में तो फ्लोट काम करेगा नहीं मतलब फ्लोट नॉट ऑफ फ्लोट काम नहीं करेगा. नॉट ऑफ फ्लोट नहीं है. नॉट ऑफ 5.5 कुछ आंसर जवाब नहीं है. नॉट ऑफ इंटीजर होना चाहिए. अच्छा इंटीजर Okay. बस बात सही बोला. बट आई टू क्रिएट इंटीजर. इफ यू टेक फ्लोट यू कैन नॉट राइट डाउन दिस. अंडरस्टूड इट? यस और नो? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So generally समझ में आया? acceleration is floating point, so that's why I should. हाँ, ये सबको समझ में आया? Yes, sir. यस सर sir. Yes, sir. Just one, hold on. Hello? Hello? Morning? Oh, sorry. ये समझ में आया? आगे बढ़े? Yes, sir. हाँ. सर यस सर सर तो सिर्फ मोशन टॉपिक सर को पता है. सर को फिजिक्स पढ़ाते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते हैं, लेकिन ऑप्टिक्स में थोड़ा ऑप्टिक्स में टॉपिक है. राइट द प्रोग्राम टू डिस्प्ले द पोजीशन, साइज एंड टाइप ऑफ द इमेजेस formed by a concave mirror. Given a concave mirror, if somebody tells the position of the object, my computer program will tell where the image will appear, what will be the size of the image and nature of the image. Do you understand the problem clearly? Yes, sir. Yes, sir. So, So for a concave mirror, the user input will be the position of the object. And my computer will say where will be the position of the image, size of the image, and whether the image will be real or virtual. अच्छा, inverted. क्या है real inverted क्या है? Real Inverted, sir. Inverted, सही है, sir. सही है, sir. कोई बात नहीं, सही. I have a table like this. ये फिजिक्स टीचर जो बोलते हैं ना, ये पढ़ लिए बोल के बोल देते हैं. at इन्फानाइट होने से कहां पे आएगा तुम्हारा इमेज, ये फोकल लेंथ में, ऐसा थोड़ी ना. ये सब रिमेम्बर किए हैं फिजिक्स टीचर लोग, बोल देते तुरंत. तुम लोग को 1-2 घंटा लगता है ये याद करने में. प्रैक्टिस करो. Experiment भी है, sir. पैरेलल लाइन है. Experiment भी होता है, Experiment भी sir. होता है, हाँ, sir. एक्सपेरिमेंट कर रहे हो. वो टीचर को बोल दो. तुम लोग कैसे टीचर को पता है? कंप्यूटर को ही पता कर लेंगे. Let's see how we'll do this. We have a table like this. I will not go for any computation here. Remember this. We are not going for any computation. A table will try to memorize it to the computers. Only this. And computer will see it from memory and tell the result to the users. No computation, mathematical computation will turn over this. I have a table. So assume that the table is written correctly. Understood? ये टेबल मैं कॉपी किया, मैंने सही लिखा बोल के अज्यूम कर लो. कि टेबल में कुछ गलत है क्या? नहीं, sir. No, No, sir. sir. No, No, sir. पूरा सही है. 10 में. मैंने कॉपी किया थोड़ी ना, मैंने कॉपी किया. So now if the position is at infinite, now the question remains,
सर ये इनपुट देंगे कैसे? Do I need to write at infinity? Do I need to write beyond the center of curvature? Do I need to write an other center of No, curvature? sir. सर उसको एक नंबर असाइन कर ले Ah, नंबर Find a number for that. see how do I do this? Very good, very good, very good, very good. अच्छा बोला तुमने, आवाज. Very good. Input. सर मैंने बोला था हाँ जो भी है, जो भी, सॉरी सॉरी. मैंने भी बोला तुम लोग करते, तुम्हारा ये तो मुश्किल है, तुम वीडियो ऑन नहीं करते हो. मैं जो नाम 3-4 आता बोल देता हूँ. वीडियो ऑन करने से तुरंत आ जाएगा तुम्हारा पिक्चर. अब पिक्चर वीडियो याद ऑन करने करने में से- आसान होता है सबसे. वीडियो ऑन करने से नेट इशू हो जाता है कभी-कभी। यस सर, काफी लैग होता है. I don't force you to switch on your video, but Yes, sir. करने से अच्छा रहता है. Yes, sir. Now position of the object. Let me take a variable PO, which is position, and output will be to display. No variable will be displayed. It will only display the position, size, and nature of the images. Declare the variables PO. Show the mapping of value of PO to different object positions. Assign values to the input from keyboard to PO. Then no computation, only IO operation based upon the position of the object, looking at the memory, and right display the output. Look at this. How did I do this? Look at this. Hash into stdio.h int man int PO. So now the point is, you can assign an integer. How a user will remember what to enter if the image is at infinite? Sorry, the object is at infinite. If the object is placed at center of curvature, which integer I should input? I'll write. So we have to make the program an interactive one. Look at this. Printf. Press 1 if the object is at infinity. Press 2 if the object is at beyond center of curvature. If it is at the center, so press curvature 3. Then if it is the focal length, so press 4. And if the object is at the focus, sorry, press 5 like this. You can press only 1, 2, 3, 4, 5. It will be displayed on the screen when the program gets executed. And you will scan that integer variable using the integer value using a variable PO. Up to this, is it understood? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, एक स्क्रीन में 2 स्क्रीन लगेगा, दूसरा स्क्रीन थोड़ा देख लो. If PO is equal to 1, if PO is equal to 1, then write down a printf statement, display the position, size and nature of the image. क्या लिखोगे इधर? Printf क्या लिखोगे? Printf position of the image is at Focus, sir. Yes. Focus. another printf size of the Highly image is diminished. Highly diminished. and nature will be real We run inverted. very good. In concave mirror, possibly all images are real and inverted. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. In convex, some are basically Virtual. virtual. एक होता है Erect and virtual. Virtual and erect. virtual or erect. Virtual erect. very मैंने थोड़ा भूल जाता हूँ, याद करा थोड़ा याद करा दो, ध्यान करा दो, ठीक है? हाँ सर. हाँ, बस. ये LCPO equal to 2, do this, LCP 3, 4, and all this I write dot, then LCP equal to 5, do this. And if somebody press 6, suppose ऐसे कुछ होते हैं, भाई बोलेगा कंप्यूटर 1 to 5 press करो, Sir, Error हो जाएगा. ऐसा होता है क्या कभी-कभी? एक एल्स में डाल देंगे एक एल्स में डाल देंगे Error डाल देंगे, sir. Display Invalid entry. Invalid. Please retry the program again जी, and again. press correct entry. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Is this understood? Did you Yes, get sir. any computers Yes, over sir. here? No, sir. No, sir. And the table is being kept in the computer and will simply do this interactive program like this. I have done it for concave mirror. Can you do it for convex mirror? Yes, sir. Yes, sir. Can you do it for a concave lens and concave lens? Yes, sir. Yes, This sir. can be done. यस सर All this can be done. So do it, it becomes a big, small project for you. Small project. You take integer, so you take integer, one integer to explain whether it is mirror or lens. Then inside, once you go another integer, concave or convex. Then for concave you write the EPS, for convex you write, and for mirror you write, and for lens you write. It becomes a small project. So we can also do like this, na, that ये we मजा आएगा. can take the radius of curvature of the mirror and then we can make the project that you were saying. Now. Huh? Yes, I'm saying. So it will become a small project. Sir, I have made a small project. So you simply tell the object
position, then tell in concave mirror, the computer will ask, give the positions. I took it. Then computer will ask you mirror or lens. Lens. Tell mirror. Then computer will ask concave or convex. You pick Concave a- or convex. Concave. Then it will show where it will be displayed and how it will be displayed. It will be a small project. So projects are like this. These are physics problem where our computer can say, so henceforth I need not remember, anytime if someone wants, I can show it in my computers. Is it understood? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Students, those who are interested can make this as a project in my class. Understood it? Yes, sir. Yes, I sir. only do Yes, it sir. for concave mirror, you do it for all 4 types. But the input will be like this, position, then mirror or lens, for mirror press 1, for lens press 2. Then it will ask for concave or convex, for concave press 0 or 1, for convex press 1 like this. Understood it? Yes, sir. Yes, sir. And further you write all this Yes, sir. statement, it will work. So that way you can make a small projects. So it will take time, but it will work, sir. It will work. It will not take a very long time. It will, Minimum time, but it will work. but it's very good. You can say I have made Yes, it. sir. Yes, sir. Yes, sir. Idea is understood how to write small program and convert it to a project like this. Yes, sir. Yes, sir. यही चीज हम सिखाने वाले हैं. ऐसा नहीं कि सी पढ़ाते हैं कुछ प्रोजेक्ट मालूम नहीं है. 2-4 क्लास में हम पढ़ा दिए प्रोजेक्ट कैसे लिखोगे. Yeah. अंडरस्टूड इट. आगे बढ़े. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे इतना सारे पढ़ने के बाद थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाए जो चीज पढ़े. हाँ. तो जानते हो थोड़ा वो चुटकी रहेगा ये ब्रेनस्टॉर्मिंग में. आओ ऐसा स्टेटमेंट है. Look at this, sorry. If E1 is expression, S1 is S1. If E1, S1. If E1 is true, S1 will be executed. If E1 is false, S1 will not be executed. Understood this, yes or no? Yes, Yes, sir. sir. All variety answers. Next. If E1 is true, S1, S2 will be executed. Otherwise, S1, S2 will not be executed. Come to Yes. Yes, sir. If E1 is true, S1 is executed. If E1 is false, S2 will be executed. Yes, sir. Understood? Yes, Yes, sir. or no? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Then, Yes, sir. again, I have block of statements. Previously, I have only one statement in the One. block. I didn't put the curly braces. Here I have group of statements. Hence, I'm putting basically a block inside curly braces. Understood up to this? Yes, sir. Yes, sir. फिर आगे बढ़ते हैं. If else like this. Write down one statement. Every else statement is the else statement of the preceding if statements. ये statement लिख के रखो copy में. Every else statement is the else statement of the preceding if statements. ये बहुत काम पे आएगा. मैं बता रहा हूँ. Sir, repeat, sir. Every else statement is the else statement of the preceding if statement. Look at this. Look at this. If I say this is my else statement, ये किसी का else statement है बोलता? E2 का. E2 का. E2 sir. ये इसका नहीं E2. होगा. इसका नहीं होगा. E2 का. E2 का होगा, sir. हाँ, वही मैं E2 बता का रहा sir. हूँ. इसका नहीं होगा. ये else statement किसका होगा? Preceding. Preceding. ये if E1 का. If Yeah. E1. E1. even का. If E1 is true, you will be executed. one is true. It will be executed, sir. Do you all agree to me? Yes or no? Yes, sir. Sir. Yes, sir. If E1 is false, तो नीचे Yes, वाला one will, answer- sir, नीचे E2. नीचे वाला E2 चल जाएगा. E2 हो जाएगा, sir. I'll tell you else part. And in the else part, if E2 is false, S3, S4. S1 and 4 S1. oh, very Yes, good, very good. very good, very good. If this is true, Yes, S2 Sir, होगा. if S2 में ही रहेगा, sir. S2. S2 में रहता है. S2 में रहेगा, sir. S2 Is होगा. this understood? Tell me yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good, very good. आगे भी एक है. ये देख लो थोड़ा. Every else statement is the preceding else statements like this. This else. Understood? Let me also tell. If I say this is true, ये true होने से कौन सा execute होगा? ये नीचे वाला एक E2 वाला S1 S2 वाला Come to E2.
If Yes, E2 sir. is true, Yes, sir. it executes S2. S1. S1. If this is false, it will Then execute it will S2 and S3. And S3. Very good, very good, very good. If I say this is false, S4 S5 only. समझ में आया ये थोड़ा बहुत कैसे कैसे होता है सब कुछ? Yes, sir. अच्छा, ये एक देखो सर लास्ट प्रोग्राम मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ये प्रोग्राम पढ़ो क्या लिखा है, एक बार पढ़ लो, मैं बताऊंगा। लॉगिन पासवर्ड तो बहुत लोगों को मालूम है। Yes, sir. User name, the login name is A, is a single character A, and password is 1 2 3 4 5. Is an integer number. Check whether the user name and passwords are correct or not. We'll write a program. The program will ask the user to enter your login first. If you give correct login, program will ask you to give you the correct password. If you give the correct password, computer will say yes, you have given correct login and password. If you enter incorrect login, your computer will say that login is Try not again. correct. Login is not correct. If you enter correct login, incorrect password, the computer will display your password is not correct. Understood it? Yes, sir. And do Yes, remember, sir. the user has given a login character A, password is a integer 1 2 3 4 5. Password is not a string; it's a number 1 2 3 4 5. Yes, sir. So how many variable I will have in my program? Two. One is Two variable. username password. Username and password. Username and password. Then we'll read the variables. And once we read the variables, we'll test. Test for username if matching. अगर username match हो गया, test for password if matching. If password is matching, login successful. And if password is not correct, Then login, your try again. username is correct, print a password is incorrect, try again. Okay. And else, if user is not entering correct login, Yes, sir. it will print Username is- username is try again. Is the program understood? Tell me yes or no. Yes, sir. Yes, sir. सर हमको लिमिट लगाना है तो Yes. पहले क्या लिखो, हाँ क्या चीज सर अगर लिमिट लगाना है कि 3 बार से ज्यादा बहुत कुछ इनकरेक्ट करेंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं। आगे ये तो समझो, ओके सर हाँ पहले ये तो समझो फिर आगे बढ़े। आओ पहला पार्ट समझ में आया कि नहीं आया बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर हैश इंक्लूड मैंने लिखा नहीं, पता है हैश इंक्लूड क्यों नहीं लिखते, मैं जगह नहीं मिलता। Yes, sir. कैरेक्टर यूजर नेम इन पासवर्ड, देन प्रिंट Yes. यूजर नेम स्कैन परसेंटेज क्लिक कर लिया। अभी टेस्ट क्या लिखे इधर बोलो, टेस्ट ये जो रेड वाला स्टेटमेंट क्या लिखे? इफ लिखेंगे इफ में लिखेंगे डबल इक्वल टू टेस्ट Print और पासवर्ड टेस्ट और पासवर्ड मैचिंग या क्या लिखे? password equal to password equal to 1 2 3 4 5. Login successful as printed password is incorrect, That's right. try again as printed username is incorrect, try again. Is it understood? Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Yes, समझ में आ गया। So आज के लिए इतना है और आगे नहीं जाएंगे, ठीक है? Interesting, sir. Yes, sir. हाँ, Sir, आज सीधे बहुत सीधे interesting आपका है। क्लास Yes, sir. कैरेक्टर का मतलब क्या है सर कैरेक्टर थोड़ा फीडबैक दे दो, डीन बैठे हैं सुनेंगे, अच्छा लग रहा है। बाद में डीन के पास कंप्लेन आ जाता, मैं ठीक से पढ़ाता नहीं। Sir, आप ही तो डीन है सर। डीन मेरा पास बैठा है। आप ही ना डीन है, सर। आप ही तो डीन है सर। आप ही तो डायरेक्टर आप ही तो सर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो आप ही हो सर। Yes, sir. Welcome, sir. सर, आप ही करते हैं सब। Yes, sir. सर आप ही तो आप ही कंप्यूटर स्कूल ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। मेरा ऊपर भी एक डीन है तुम्हारा कंप्यूटर साइंस डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा, वो कभी कभी बोलता सर आप पढ़ाते नहीं ठीक स्टूडेंट। हाँ यस सर, आपके ऊपर भी एक डीन है। सर सबसे हम लोग के लिए सर आप ही डीन है। डायरेक्टर ऑफ स्कूल ऑफ कंप्यूटर यू आर द रीजन इंजीनियरिंग। व्हाई कंप्यूटर में इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा नहीं ऊपर होके क्या फायदा है? हाँ सर। हाँ, sir. समझ में आया सब कुछ? Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छे से. Yes, sir. Yes, बहुत sir. interesting. अच्छा। ये सब काम करोगे? हाँ बोलो। सर आपने जो प्रोजेक्ट के बारे में बोला है आ रहा हूँ मिस, आ रहा हूँ। सर
ये नहीं, हम नहीं बोल रहे सर, हम नहीं बोल रहे। नहीं, अमिश ने कौन बोल रहा है? सुप्रदीप। शुभांकर शुभंकर अमित सर, शुभांकर सर बोल रहे मेरा मेरा हैंड रेज है अमित। कुछ और पूछने के लिए, उसके लिए नहीं, वो प्रोजेक्ट का कोई और बोल रहा था। अच्छा, ये कर पाओगे लॉगिन पासवर्ड वाला प्रॉब्लम? नाउ यू कैन डू दिस। Yes, sir. First, Sir. Yes, sir. Now Yes, this sir. थोड़ा बहुत ये brainstorming, you also write some experiment on this and experiment what is working or not. And prior to that, make a project. Start with only concave mirror, go with convex mirror, then go with a concave lens and convex lens. Make it a small projects. As I told, today you should do. सब वो भी तो सर नेस्टेड ई में नेस्टेड ई हाँ, नेस्टेड करो, नेस्टेड जो भी है डालो, सब कुछ डाल दिया। इससे हो सर बस बन जाना चाहिए। जाएगा। Then you do this, whether the vehicle moves with a constant velocity or constant acceleration or decelerations. Understood? Yes, sir. yes, sir. So, उससे पहले Yes, हमने sir. करवाया था क्या? Given 3 points in a 2-dimension test, Yes, whether these 3 points will Triangle. constitute a triangle or not. ये हो गया। उससे पहले accountancy का problem पढ़ाया था, you calculate the salary, Yes, but sir. when you calculate the gross salary, don't forget to write dollar, because this rupees will not work henceforth. 1,000, 2,000 वो फलाना का, but now you calculate dollar. सर ये जो प्रोजेक्ट दिए सर हाँ, उसको नेक्स्ट वीक में हम लोग शो कर सकते हैं ना सर? आज ही कर सकते हो। किताब आज ही पास में फिजिक्स वाला किताब है तो देख के आज ही कर सकते हो। क्या तो ठीक है सर। महीना लगेगा। सर सर क्या अमीश? सर अटेंडेंस If you have a physics book, can be done. Sir, Yes, sir. यस सर, गूगल सर आज ही हो जाएगा। गूगल पे है तुम्हारे पास। Yes, हाँ, sir. sir. Yes, sir. हम कुछ और बोल रहे हैं। Don't ask me, sir ये convex mirror में होगा क्या? I don't know. You have to find it from Google. सर हम कुछ और बोल रहे हैं सर, हम लोग का सर, अटेंडेंस कुछ और SAP बोल रहे हैं, पोर्टल पे अपडेट नहीं हुआ है, वहाँ पे सर एब्सेंट वो किया है। Absent हो रहा है सर। Yes, sir. सो रहा है सर। Yes, sir. सर क्या चीज? Yes, sir. सर सर, आपका अटेंडेंस attendance अरे सर होगा, absent साफ होटल अभी छोड़ो ना, वो 4 दिन छोड़ो, मेरे को थोड़ा रेस्ट मतलब मैं साफ होटल में हो सर वहाँ जाएगा। अपडेट नहीं हुआ है, उसका इशू नहीं है, वहाँ एब्सेंट दे रहे हो। नहीं वो प्रेजेंट कर दूंगा, तुम टीचिंग असिस्टेंट को प्रेजेंट दो। अरे अफसर साहब कौन नाटा मरो again, sir, namaste again. ऑन करो, तुम कहीं आसु नहीं Sir, audio on କରିଛି। ऑडियो ऑन କରିଛ, ଲେଖିଲେ ଆସିବ କି? हाँ ଆସିଲା। Now student, you enter to your breakout room. कुछ डाउट है तो आयुषी क्या अमीश, आयुषी you can ask, अमीश you can ask, और enter to your breakout room. Sir, in that Okay. programming question, not A मेरे को समझ नहीं आया. कौन सा? Not A. Sir, yes, Not A, sir. एक बार प्रैक्टिस करो, एक बार प्रैक्टिस करो। You honest, you take one integer, int A equal to 1, write a Yes, sir. statement, if A printf something, else printf something, ठीक है? Okay, sir. Now you keep on changing the value of A from 0 to 1, 1 to 5, see what is happening. Okay, sir. Then you understand. सर Thank you. After finishing this, you write if not A, practice. Yes, सर sir. मान लीजिए यूजर ने A की वैल्यू दे दी 5 और यहाँ पे आप